Dear students, I am going to teach you biology for class 9. In biology, today I will teach you the prokaryotes and eukaryotes. Somewhere prokaryotic or eukaryotic cell. Earlier you have studied the nucleus, its structure and function, but today we will study and try to understand what are the prokaryotic cell, what are the eukaryotic cell, and how the prokaryotic cell is different from eukaryotic cell. तो यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में अंतर भी लास्ट में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम समझने की शुरुआत करते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, कैरियोट्स और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स। यस, द सेलुलर स्ट्रक्चर इज ऑफ द टू टाइप्स। सेलुलर स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक। इन यूकैरियोट्स, यू मीन्स ट्रू and karyote means nucleus. So the meaning of eukaryotes is true nucleus. Means in eukaryotes a true nucleus and membrane bound cell organelles are present. यानी eukaryotes के अंदर true nucleus और membrane bound cell organelles present होते हैं। The same are lacking in prokaryotes. Means in prokaryotes में true nucleus और membrane bound cell organelles absent होता है। And what is the meaning of the prokaryotes? Prokaryotes generally made up of the two words pro and karyotes. Pro means primitive and karyotes means nucleus. Means here the meaning of prokaryotes is primitive nucleus. Prokaryotes comprise bacteria and cyanobacteria. Means cyanobacteria जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं और बैक्टीरिया, ये दोनों प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल्स हैं। जबकि प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्रोटोजोवंस, these are the examples of eukaryotes or eukaryotic cell. Yes, just here I have draw the diagram of the prokaryote cell. This is the diagram. Look it carefully. Here this is the outer membrane that is generally shown in the red color, and just inside it there is the dark color. This is the cell wall, and cell wall just behind it there is the plasma membrane, and this is the mesosomes, and here the hair like projections, these are the fimbriae, and the red color and circular in small, they are numerous in number, these are the ribosomes, and here these are the flagella, 1 2 3 4 I have labeled here flagella, and this is the nucleoid, and this is the diagram of the prokaryotic cell. Try to understand. A nucleus is absent in prokaryotes. Earlier just I have told pro means primitive and karyotes means nucleus, means primitive nucleus, यानी यहाँ nucleus present होता ही नहीं है। There is no nuclear envelope, कोई nuclear envelope या membrane नहीं होता है। Genetic material lies फ्री इन द साइटोप्लाज्म, ये पूरे साइटोप्लाज्म में जेनेटिक मटेरियल फ्री होते हैं। इट इज़
इक्वल टू ए सिंगल क्रोमोसोम, और इसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है, एंड दिस इज जनरली नोन एज द न्यूक्लियोइड. The prokaryotes also lack membrane covered cell organelles, यानी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल्स का प्रोकैरियोट्स में अभाव होता है. द फंक्शन ऑफ दीज ऑर्गेनिल्स आर परफॉर्म्ड बाय द पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म. जो पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म होते हैं वही सेल ऑर्गेनिल्स का काम करते हैं. दे आर हाउएवर स्मॉलर. व्हाट स्मॉलर? ribosomes that is present in ribosomes that is present in prokaryotic cell. They are smaller, means they are 70s type as compared to the eukaryotes. माने यूकैरियोट्स में 80s टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि 70s टाइप के राइबोसोम ये प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं. Yes, now come to the differences between prokaryotic and eukaryotic cell. One by one we will try to differentiate prokaryotes and eukaryotes. First is the size. When you come to the size, generally the prokaryotic cell are small, means 1 to 10 mu micron, and 1 mu micron is equal to the 10 to the power minus 6 meter. When we come to the eukaryotes are generally larger in size, and it is generally 5 to 100 mu micron. सेकेंड पॉइंट जब आते हैं न्यूक्लियर रीजन में कि दोनों में क्या डिफरेंसेज हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में, तो इन प्रोकैरियोट्स अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, एंड दैट इज region containing only the nucleic acid. And what is the nucleic acid? Nucleic acid is the genetic material that is known as nucleoid in prokaryotes. In other words, we can say in prokaryotes not well organized nucleus present. यानी well organized nucleus is absent in prokaryotic cell, while well defined and surrounded by the nuclear membrane present in eukaryotic cell. Means eukaryotic cell के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, वो भी well defined and surrounded by nuclear membrane. जब क्रोमोसोम की बात करते हैं दोनों में डिफरेंसेस की, तो प्रोकैरियोट्स में सिंगल क्रोमोसोम होता है, वाइल इन यूकैरियोट्स इट इज मोर देन वन क्रोमोसोम. नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल. मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, वाइल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल इज प्रेजेंट इन eukaryotic cell. Another point is the nucleolus. Nucleolus is absent in prokaryotic cell while it is present in eukaryotic cell. Centriole. Centriole is next point is the centriole. Centriole is absent in prokaryotic cell while it is present in only the animal cells in eukaryotic cells. And after that, the what organism came in category of the prokaryotic cell? Then we generally say the bacteria and cyanobacteria, blue-green algae, are generally came in category of the prokaryotic cell, or these are the example of prokaryotic cell, while the eukaryotic cell generally contain
फंजाई, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अगर अगला पॉइंट हम बात करते हैं सेल डिवीजन का, तो सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन प्रोकैरियोटिक सेल बाय द फिजन, FISSION, फिजन, और फ्यूजन, FUSION, फिजन और बडिंग, मीन्स देयर इज नो माइटोसिस। यहाँ माइटोसिस होता ही नहीं। जबकि सेल डिवीजन इन यूकैरियोटिक सेल it generally occurs by mitotic or meiotic cell division. Earlier I have told you the differences regarding the types of the ribosomes, because the ribosomes are present in both prokaryotic and eukaryotic cell, but 70 S type ribosomes are present in prokaryotic cell, while 80 S type chromosomes are present in eukaryotic cell. And the 10th and last point of the differences between the prokaryotic cell and eukaryotic cell is the prokaryotic cell mostly unicellular, while eukaryotic cells are mostly multicellular. In this way, I have differentiated between the prokaryotic and eukaryotic cells. And at last, I will give you one homework, and in this, the question is, how is a prokaryotic cell different from eukaryotic cell? I just repeat once again. How is a prokaryotic cell different from a eukaryotic cell? In this way, just after completing this video, I hope you will like, subscribe and press bell icon. That's from my side today in class 9 biology.